we were discussing the contents from chapter 12, magnetism. We just refresh the contents before proceeding. Magnetism is the common property. Few materials show naturally the property of magnetism. Artificial magnets can be prepared having desired shape and of desired magnetic dipole moment. So this is all about the magnet. Most common format of magnet used for practical purposes is the bar magnet. With considering bar magnet, we studied earlier few properties of every magnet, common properties for the magnets. So we know when magnet is suspended freely on Earth's surface, it always gets aligned in its geographic north-south direction. This is one property. The other common property, magnetic effects are maximum at two particular points within the magnet, which we call them as magnetic poles. We studied what is magnetic dipole moment. If magnetic dipole moment associated with the given magnet is non-zero, then and then only the substance shows magnetic properties. For bar magnet, magnetic dipole moment M is pole strength of any one pole into its magnetic length 2L. So magnetic dipole moment is very important. So magnetic dipole moment associated with each and every magnet enables the magnet to produce magnetic field in its surrounding. So this dipole moment is very important. So how does this dipole moment gets associated with the substance, which gives you origin of magnetism? We all know, 1 minute. Each and every substance is made up of atoms or molecules. In each atom, you get different orbits around the nucleus. In permitted orbits, electrons revolve. So, what happens here? Each orbit carries a current. Motion of charged particles, electron has charge. So when charge is in motion, each current orbit, electron orbit, behaves as current loop. And every conductor carrying current produces magnetic field in its surrounding. We all know this is called magnetic effect of electric current. So each and every orbit, since behaving as a current loop, is able to produce magnetic effect, and thus each atom and hence the entire substance possesses this magnetic property. So we focus today on current loop, and we will study the magnetic field produced by such current loop. We will compare magnetic field pattern produced by current carrying circular loop
with the bar magnet, and then we will study equivalence between the two. So today we will proceed further to study magnetic field produced by current carrying circular loop, which gives the origin of magnetism for the given substance. So if you take any conductor carrying current, suppose in circular form, in the form of closed current loop, like this. This is the current loop carrying current. Each current loop has two separate faces. I am showing you this face of red color and this face of green color. So even it is very small, very thin, always each current loop has two faces. This one and the other one. Let the face be A and this side face be B. So I have given you one, I have taken this bangle. The bangle has two separate colors. So upper surface and the other is lower surface. So even very thin, these two surfaces are separated from each other. So like this, you can place this current carrying circular loop horizontally, parallel to Earth's surface. Then you can locate only its front line. The line passing through its center and perpendicular to its plane. This is horizontal plane. You draw line passing through center and perpendicular to the plane of the coil. This is called axis of that circular coil. So in this diagram, I have kept this coil in vertical plane like this. So his axis is pointing outwards. The axis is perpendicular to the plane in which we have drawn the figure. In this figure, we cannot show the position of axis because this axis is perpendicular to the plane in which the figure is drawn. So you can keep such coil anytime in vertical plane like this or like this. Only the front part is visible. So in this both cases, the coil is placed in vertical plane, a plane perpendicular to earth surface, like this, parallel to blackboard, or perpendicular to blackboard like this. So in both these cases, the coil is placed perpendicular. You can keep this coil horizontal plane, in horizontal plane like this. That is in the plane parallel to earth surface. In such figure, you can show the position of axis of circular loop. In this figure, the axis cannot be shown. So I have shown it through using this dotted line. Dotted line means what? The axis is perpendicular to the plane in which the circle is drawn. Always keep in mind, axis is perpendicular to the plane of the coil. This is the main thing. Now, in both these positions, we will get the same results. Suppose the coil is placed in a horizontal plane, parallel to earth surface. Assume करना है. I will keep this like this. So you can see only its front part, but I can show it in figure. This part we cannot see. When you observe it from front view, ये front view है, मैंने top view नहीं निकाला है. ये top view होता है और ये क्या होता है, side view, यानी कि front view होता है. सो पीछे वाला हिस्सा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने इसलिए इधर डॉट लगाए हैं. It has certain thickness, even very thin. That coil possesses thickness. So this is the upper face, and this part
is its lower face. Let this upper face side A and let this lower face side B. If I keep it like this, the axis will be perpendicular, that is along y-axis. And I have kept it along x-axis, parallel to horizon. So what happens when current passes through such a coil? अभी देखो मैं आपको डेमो दिखा रही हूं, ठीक से ध्यान से देखना है. सपोज करंट पासिंग इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेल्स, यानी कि ये बाजू पीछे जा रहा है और ये बाजू से पीछे से आगे आ रहा है, कमिंग अप. सो इट इज गोइंग डाउन and from this side it is coming towards you. You can easily show this if you have the top view. टॉप व्यू मैंने देखा तो कैसा दिखाई देगा, ये ऊपर से देख रही मैं तो एक फेस पूरा दिखाई देगा, दूसरा फेस बिल्कुल नहीं, और एक्सिस एंड माय आई साइड बोथ विल बी पैरेलल टू ईच अदर, बट आई कैन ऑब्जर्व द एंटायर एरिया. एरिया जो है ना लूप का मेरे को दिख रहा है, तो आई विल शो लाइक दिस. सपोज this is one face and if I turn it around, the other face, other color, ये green है और ये orange है, दो अलग अलग फेसेस है. तो ये अलग अलग फेसेस में इधर ड्रॉ कर रही हूँ. सपोज ये ऑरेंज वाला है तो ये फेस ए हो गया ऊपर से देखा तो, और ये फेस बी हो गया. कौन से भी पोजीशन में आप लोग ये कॉइल फिक्स कर सकते हो. ओनली रिमेंबर एट दिस केस द कॉइल को ये जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है. अभी एज्यूम करो कि करंट इज इनसाइड, इनवर्ड्स, सो फ्रॉम दिस साइड करंट विल बी आउटवर्ड्स. तो सपोज ये इनवर्ड है और ये ऐसा है, तो ये अगर मैंने ऐसा लेट लिया तो करंट फ्रॉम दिस साइड इज अप. मैंने अगर उसको 180 डिग्री में टर्न किया तो यही साइड में वो कैसा आएगा, डाउन आएगा. सो दिस इफ दिस इज अप, then on the same side of the other face the current will appear to come down. So this is anti-clockwise. If current is anti-clockwise for the other face it will be clockwise. ये ऐसा है ना, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो मैं अगर अलग बाजू दिखाऊं तो ये ऊपर जा रहा है और ये बाजू से करंट कैसा आ रहा है, नीचे आ रहा है. तो फॉर वन फेस इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, फॉर द अदर फेस ऑफ द सेम कॉइल द करंट विल बी क्लॉकवाइज. टर्न ओवर, ये दो फेसेस अलग अलग है ना, तो दो फेसेस अलग अलग है. इसके हिसाब से अगर ये ऊपर जा रहा है और मैंने टर्न किया तो ये ऊपर है, यानी कि ये साइड पे डाउन आएगा, और लेकिन ये साइड पे क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था. तो ऑन बोथ दिस फेसेस the direction of current will get changed. If for first phase direction is anti-clockwise, for the second phase it will be in clockwise sense. So what happens actually, we assume this current coil made up of two different orbits. Electron orbits है ना, ये electron orbit है ऐसे assume करो. ये ऊपर वाली एक orbit है और ये नीचे वाली एक orbit है. So electron orbit means the charge is in motion through that conductor, and when current flows through the conductor of any shape, it is able to produce magnetic field in its surrounding. So for current carrying loop, magnetic field produced is along the axis. Either it will point up or it will point down. The direction of magnetic field produced is given by right hand rule. Right hand rule क्या है? You have to hold the conductor carrying current in your right hand with thumb outstretched and fingers curled. ये fingers curl करनी है और thumb outstretch करना है. Keep it in the hand. अगर मैंने ले लिया
सर्कुलर कॉइल लिया, तो क्या करना है, द कर्व फिंगर शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस जा रहा है, तो दे शुड पॉइंट इन लाइक दिस अप. देन थंब आउटस्ट्रेच, ये कर्व फिंगर्स है ना, ये ऊपर जानी चाहिए. थंब आउटस्ट्रेच गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैंने अगर ऐसा होल्ड किया तो कर्व फिंगर्स ऐसे जाएंगे and the thumb will point towards right, that is along the axis. Every time you change the plane, ये ऐसा है तो थंब अप आएगा, ऐसा मैंने किया वर्टिकल प्लेन में तो थंब राइट पे जाएगा. सो प्लेन के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा वो along the axis रहेगा. Only the direction of current gives you the direction of magnetic field developed. अभी देखो ये मैंने होल्ड किया, ये अप जा रहा है करंट, ऐसा एज्यूम करो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो मेरे फिंगर्स ऊपर जाएंगे और ये थंब क्या आएगा, अप के बाजू, सो पॉइंटिंग आउटवर्ड्स. अगर मैंने ऐसा रखा ये हिसाब से तो द एंटी क्लॉकवाइज है तो अंदर जा रहा है, तो कर्व फिंगर्स अंदर गए और थंब कैसा रहा है, आउटस्ट्रेच ऊपर. सो फॉर एंटी क्लॉकवाइज करंट magnetic field produced is along the axis and pointing outwards. ये जो फेस है ना ऊपर वाला, उससे बाहर आ रहे हैं, बाहर जा रहा है. अगर आई ऑब्जर्व द अदर फेस कौन सा है, नीचे वाला, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे में क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा. तो अगर इट कम्स क्लॉकवाइज लाइक दिस, ये बाजू आएगा ना करंट आपके बाजू में, तो द फिंगर और द थंब इज पॉइंटिंग डाउन. सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है along the axis but down side. This is up side and this is down side, inwards. ऐसा हो सकता है. तो ये क्या होता है, this will the phase where magnetic lines originate and this is the phase where magnetic lines are coming in. So one phase will behave as N pole and the other phase carrying clockwise directional current will behave as S pole. So each and every current carrying circular loop, I am talking about the particular shape. The current conductor is not straight, it is not triangular, it is not rectangular, it is circular one. I am talking about only the circular one. So if the current carrying loop is circular and close होना चाहिए, तो both the faces will behave as two separate poles. For anti-clockwise current, that particular face behaves as N pole, एंटी क्लॉक, ऐसा ध्यान रखो. एंड क्लॉकवाइज करंट का जो फेस है, एस निकालो, ऐसा एस, तो ये क्लॉकवाइज आ जाएगा. सो इट विल बिहेव एज एस पोल, ये क्लॉकवाइज है. एंड फेस ए कैरिंग एंटी क्लॉकवाइज करंट, N pole. Face B of the same current carrying loop carrying clockwise current will behave as S pole. So every current carrying circular loop is again a dipole. वो मैग्नेटिक डायपोल जैसा बिहेव करते हैं. इसीलिए each and every electronic orbit behaves as if it is a tiny magnet and thus the entire substance has magnetic ability, it is able. So if M is non-zero but this M, magnetic dipole moment for the substance, arises due to number of electrons revolving in different orbits. This is the origin of magnetism. I already have told you electricity and magnetism are interconnected.
even though they are separate branches, they are interconnected. Due to electricity, the magnetism arises. Due to magnetism, we can say इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे हम लोग इंटरकनेक्शन ले सकते हैं. सो इफ दिस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप having two faces, अलग अलग फेसेस है उनके, ये बाजू और ये बाजू, इट इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट. बार मैग्नेट में भी ऐसा ही होता है, एन पोल ऑन वन साइड एंड एस पोल ऑन द अदर साइड. Only remember, the field produced by this circular coil is always in plane perpendicular to it. It is along the axis. ये उसका axis हो गया. तो क्या होता है, if you keep it vertical, ऐसा रखा तो ऐसे the field gets produced in the horizontal plane. ये horizontal plane है ना. अगर coil आपने perpendicular रखी तो एन पोल से चालू होगा और एस पोल में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड हो जाते हैं. इधर से चालू होंगे, ये अदर फेस में एंड हो जाएंगे. एंड यू शुड कीप द बार मैग्नेट विथ इट्स लेंथ इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. देन इन बोथ दिस केसेस फील्ड पैटर्न्स गेट equivalent. Only having same magnetic field, the current loop should be kept perpendicular to the plane in which you are having the magnetic field. अब ये करंट कॉइल लूप है, वो मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रही है. यानी कि क्या, फॉर ईच एंड एवरी करंट कैरिंग लूप magnetic dipole moment should be present. If M is absent, then how could current loop can produce magnetic field? But it does not have length. ये जो लेंथ है ना, हम लोग ये फॉर्मूले यूज करते हैं m इंटू 2l. तो 2l इसमें है ही नहीं, उसका पूरा एरिया है, उसको रेडियस है. एंड रेडियस, बाय यूजिंग दिस रेडियस यू कैन हैव द एरिया फॉर द कॉइल. So it is observed experimentally and also proved magnetic field produced by current carrying loop is the function of area of the coil. Also, it is observed that magnetic field strength produced depends on the value of strength of current, magnitude of current. So, this magnetic field produced by current carrying circular loop is proportional to current I and proportional to area of the coil. So, with some constant of proportionality, I can write dipole moment of current carrying circular loop is equal to NIA, where N is called number of turns. If coil has 5 turns, like spring bangle, वो स्प्रिंग रहते हैं ना, अपना वो पेन रहता है, वो टिक टिक वाला पीछे आगे होता है, उसमें स्प्रिंग है. देखो स्प्रिंग में क्या होता है, each and every turn has same radius. If current flows through this, then in the other it will go up down. It will go in the third turn down. In fourth turn from पीछे से up जाएगा तो आगे से क्या आएगा, नीचे. So through each and every turn the direction of current will not change. वो कैसा हो जाता है, clockwise. So having number of turns but of finite length, उसकी लेंथ हम लोगों ने फाइनाइट रखी है. सो सच इज कॉल्ड फाइनाइट सोलेनॉइड. उसको सोलेनॉइड बोलते हैं. वो स्प्रिंग रहती है ना पेन की, नहीं तो स्प्रिंग बैंगल रहते हैं छोटे बड़ी बच्चियों के, वो उस टाइप का है. वो सबकी रेडियस कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. So if number of turns are increased, value of magnetic dipole moment M also increases. And for each turn, the direction of field will remain same, because what, the current through each turn is not changing. So direction of field is not changing. So total magnetic field developed by such solenoid will be the function of sum of dipole moments of each turn. हर एक टर्न को अपनी अपनी डायपोल मोमेंट आ जाएगी, तो टोटल डायपोल मोमेंट m रहेगी. एंड दिस इज गिवन बाय
capital M is equal to NIA. So for current carrying circular loop, closed loop, value of M is equal to NIA. If it is of rectangular shape, नहीं तो स्क्वायर शेप में भी करंट कंडक्टर हो सकता है. स्क्वायर शेप में लिया तो भी उनको दो सरफेसेस तो मिलेंगे, आगे वाला और पीछे वाला. लाइक दिस पेपर, दिस इज फ्रंट सरफेस एंड दिस इज द बैक सरफेस. ये दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है. तो one face will act as S pole, the other surfaces act as N pole. If the current is down, if you turn over on the same side, the current will be up. So एक बाजू clockwise होता है, दूसरे बाजू में देखा तो एंटी क्लॉकवाइज होता है. खाली value of area will change. For current carrying circular loop having n turns, the value of M will be Ni pi r square. If the coil is rectangular, then N and I will not change. They will remain same. Only area will be L into length into breadth. So, but field pattern produced by rectangular current carrying conductor does not resemble with the field pattern of bar magnet. Bar magnet का जो field pattern है ना, N से S. और रेक्टेंगुलर कॉइल अगर आपने ली तो फील्ड पैटर्न, ये दोनों लाइक नहीं है, सेम नहीं है. ओनली फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सर्कुलर लूप रिजेंबल्स विथ द फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट, एंड हेंस वी कैन प्रूव इक्विवेलेंस बिटवीन बार मैग्नेट and current carrying circular loop of even single turn or having number of turns but of finite length, that is called solenoid. So single current loop is also a tiny bar magnet, and solenoid, what is that? Number of current loops of equal radii, and hence strength of magnetic field produced by finite solenoid will be greater. So this is resemblance between current carrying circular loop and bar magnet. The dipole moment of current carrying circular loop having n turns of area A, thus will be M is equal to NIA. So value of M, जो हम लोग यूनिट देखते हैं ना, वो हम लोग यूनिट क्या लेते हैं? एम्पियर मीटर स्क्वायर. नंबर ऑफ टर्न्स इज अ प्योर नंबर, करंट इज इन एम्पियर एंड एरिया इन मीटर स्क्वायर. So SI unit of magnetic dipole moment will not change. बार मैग्नेट का भी एम्पियर मीटर स्क्वायर ही रहेगा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का भी एम्पियर मीटर स्क्वायर ही रहेगा. The quantity is same, so its unit will never change. Only we'll use this formula to find it. So tomorrow we'll solve few numerics based on, and then we'll proceed further for Gauss's law in magnetism. Thank you all of you to be the part of this. I am closing the meet. The time is up for everyone.